guys, welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe and hit that bell icon. यहाँ से 60 किलोमीटर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। ये यहाँ से टिकट बारी है, लेफ्ट हैंड साइड। White deer, हमारा deer, white deer. चित्तल लागे છે. मीटर 45 फ्लोर 450 फीट पे खड़े हैं। ये मैक्सिमम लेवल है, इसके ऊपर नहीं जाना है। ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है और 47 मीटर्स है, लेकिन सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं। वर्ल्ड में जितने भी स्टैचूज है उनकी हाइट आप नीचे म्यूजियम से आए, म्यूजियम लेवल से गिनने में आती है, जो है 182 मीटर 182 मीटर। और 182 क्यों रखी है? तो गुजरात के जो एमएलए की सीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट, वो 182 है, इसलिए स्टैचू की हाइट 182 रखी है। यही जगह क्यों पसंद की? क्योंकि सामने है डैम, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर, जो सरदार साहब का सपना था सरदार सरोवर डैम बनाने का। आज हम यहाँ खड़े रह के सामने डैम देखना है। पीछे आप देखेंगे राइट साइड में है सातपुड़ा पर्वतमाला, लेफ्ट साइड में है विंध्याचल पर्वतमाला। दोनों पर्वतमाला के बीच में है सरदार सरोवर डैम, जिसमें बहती है नर्मदा नदी।
अब बात करते हैं स्टैचू बनाने में कौन से मटेरियल का यूज किया है। 85% कॉपर का इस्तेमाल किया है, तांबे का। 55% जिंक, टीन और लीड का उपयोग किया है। कॉपर का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगेगा। 1700 मैट्रिक टन कांस्य का आवरण चढ़ा है, ब्रॉन्ज क्लैडिंग किया है। 6000 मैट्रिक टन जितना स्ट्रक्चर स्टील का यूज किया है। 18500 टन जितना रीइंफोर्समेंट स्टील का यूज किया है। 2013 में लोहा कैंपेन लॉन्च किया था, जिसमें सारे फार्मर से 134 मैट्रिक टन आयरन डोनेट में मांगा था। स्टैचू के आर्किटेक्ट थे राम वी सुथार। जब उन्होंने स्टैचू का डिजाइन बनाया तब उनकी उम्र एज 90 साल की थी, 90 ईयर्स। अभी उनकी एज 95 ईयर्स की, अभी भी वो काम करते हैं। अभी वो नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में उनका स्टूडियो है। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 3.5 साल। इसका कंस्ट्रक्शन किया L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। पीछे आप देखेंगे ब्रॉन्ज प्लेट्स हैं, सर्कुलर शेप में, गोल शेप में। ऐसे पूरे स्टैचू में 6500 प्लेट्स हैं। प्लेट्स पे पीले कलर में, येलो कलर के टैग में नंबर्स लिखे हैं। वो नंबर क्यों लिखे हैं? कि कोई भी प्लेट ब्रेक या डैमेज हो जाए तो उस नंबर से उसी साइज की दूसरी प्लेट हम बना सकते हैं। यहाँ ऊपर आप देखेंगे कोई जैकेट का बटन है, ये अंदर बड़ा सा गोल बटन, ये उनके जैकेट का बटन है। ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे नंबर के बटन के बीच में खड़े हैं। ये बीच का पोर्शन आप देख रहे हो, सेंटर बटन पट्टी का पोर्शन है। ये पूरा जाली से जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो उन्होंने जैकेट पहना है, उनके जैकेट का पोर्शन है। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन आउटर पार्ट और उनके शॉल का पोर्शन है। बाहर जो स्टील स्ट्रक्चर से ग्लास से आपको वो देखना है, पीछे का बैक व्यू देखना है। आप लिफ्ट में आए, आप 38 से 40 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए। पर सेकंड 4 मीटर, बहुत फास्ट लिफ्ट है। आपको नीचे जाना है, म्यूजियम में जाना है, म्यूजियम देखना है, म्यूजियम से फिर उनके पैरों पे जाना है।